Hello Aditya. So congratulations on your success. Thank you, sir. So let us introduce Mr. Aditya. Aditya has got rank 584 in the Civil Service Examination 2024, and he has taken history as an optional. So we will discuss his journey, how he started the preparation of civil services, and till this year's success. तो आदित्य आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सिविल सर्विस के बारे में कब सोचा था पहली बार? So basically, I am from a village in Bihar, sir, Simra village. But I had my schooling at Sainik School, Kodgu, Karnataka, for 7 years. So basically, in the school, there was always a comparison between Bihar and Karnataka at the kids level. So we had this one thing that Bihar gives many civil servants. So that was part of one factor for us, one of the factors. So that led to a little bit inclination towards the civil services from the childhood time. But I wanted to join army and I was unfit because my height is inadequate. So the next best option for me was the civil services. So after coming out of Sainik School, I had made up my mind that I will be going for the civil services. So I came to Delhi, joined Delhi College of Arts and Commerce and took history as a subject. And after completing my graduation in 2021, I joined a foundational course at the coaching institute, and 22 I gave my first attempt, and I missed the final cutoff by 4 marks. I attended interview in first attempt also, in second also, and this was my third attempt with the history optional, it seems. Okay, so your journey has been very interesting that you thought of it in 2000 in your schooling only. Yes. और स्कूलिंग के बाद आपने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इंटरव्यू दिया था. Yes. तो आपने जब तैयारी स्टार्ट की तो आपने कोई फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन किया. किसी बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पूछें तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? अगर सपोज किसी को कोचिंग ज्वाइन करनी है तो किस तरह की कोचिंग ज्वाइन करें, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखें कोचिंग ज्वाइन करते वक्त? अगर सेल्फ करना चाहता है कोई तो क्या तरीका हो सकता है? As of now, first thing is about making up your mind whether you want to give it or not. That itself is a very big decision because it will take at least your 2 to 3 years of your life. That is the least if you are very good. And once you have decided, then now on the YouTube or the open sources, many things are available. So that can give you a pretty good idea of what to read, what not to read, about the basics books and all. So if you are going for the coaching, I would say that almost all the top coaching institutes give a similar kind of courses as well as at the similar level. So that is not a very big differentiating factor between all of them. So I took coaching at the Next IS and it was good. It helped me a lot to build my base as well as the foundational subject, especially subjects which are very dynamic in nature and which I had not read before, like economics, science and tech, environment, those kind of subjects. Right. So I think the most important factor is about self-analyzing yourself and going according to that. If you are very good in economics part or something, then you can focus on the history. And the thing which I followed during my coaching was I did not attend all the classes because I thought that the subjects like polity or history, if you can read it by your own, especially for the GS part, then it takes very less time. And if you go by the class, it will take more time. But the subjects like science and tech, economics, they require the presence of teacher or the explaining of the concepts. So if you are joining any foundational course, then you can make up your mind and make your routine as per your strength and weaknesses. And for the people who are doing self preparation, that is very well possible because of the digital technologies as well as the digital content which is available now. So if they follow some authentic sources from the Telegram as well as the YouTube, that will do more than enough. It is about the effort of the candidate. For around 70 to 80%, the effort matters most. आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप अगर फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन करते हैं
तो उन्हीं सब्जेक्ट को आप अटेंड करें जहाँ पर आप वीक हैं, या फिर जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी जो टीचर्स हैं वो आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और मैंने भी 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है, और मैं भी इसी चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर आप फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन करते हो, आप ये उसको 100% फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी एरिया में ऑलरेडी स्ट्रांग हो और क्लास के अंदर जो टीचर होते हैं वो एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आप इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से आपका दूसरा एरिया कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो आपने बहुत अच्छी टिप दी है, अगर आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ आप अपने हिसाब से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो प्रीलिम्स के आती है, सबसे ज़्यादा डाइसी स्टेज हो जाती है, तो उस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? The things which I focused on, first thing was the foundational basis of all the subjects, especially science and tech, environment, because foundational knowledge is very important to understand the current happenings. And the subjects like polity, economics, and geography, they are like 80 to 90% foundational only. So if you have a very good understanding of basics of these subjects, you will be pretty much comfortable during the prelims as well as the mains. And the prelims, my go-to option was solving questions. So during the first attempt, my foundational course was not yet finished when I attended prelims. Achha, okay. But I was solving questions very regularly. I like to attend questions. So that helped me, and the reverse learning which people talk about, learning from the answers and the description given. So that has helped me very much. And when I gave my first test, I attended around first mock test. I attended around 60 to 70 questions. So that was the first time I got around 60 marks in prelims mock. But that day I realized, when I came out of the mock test, I realized that I could have attended more. So from that day, my policy is that I will attend at least above 80. And from that day, I have never got less than 75 in any of the mock tests. So that has helped me sail through all the 3 prelims. And I would say that the D-Day in the prelims matters a lot. If you have confidence on the D-Day, it can make or break your prelims chances. Because for most of the people, except few exceptions, many of the candidates know only 40 to 42 questions correctly. After that, it comes down to rational elimination as well as intuition. Some risk taking. So if you have given enough mocks as well as practiced enough, you are well likely to do well over there. So that is things. Right. तो आपने बताया कि एक तो हमें जो कोर एरियाज हैं वहाँ पर फोकस करना है, सेकंड आपने बताया कि मॉक प्रैक्टिस करना है जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की हैबिट हो सके। और अब प्रीलिम्स की अगर बात करें तो 2 चीज़ें और भी यहाँ पर आती हैं। एक होता है सीसेट। आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, तो सीसेट आपके लिए कैसा रहा? Sir, actually till class 12th, after 10th I had PCMB. Okay. In Sainik School it is compulsory to take PCMB to appear in the NDA. Yes. And I had appeared in NDA, so I was pretty much comfortable with CSAT. this comprehension. Okay. And so 22 was a very easy sale for me. Right. So what mistakes I did after 22, I did not prepare anything at all for CSET. Right. I went directly to the 23 CSET paper. And it was very difficult paper. I was horrified. Yes. When I came out of the exam hall after CSET, I was horrified. Because problem with maths or reasoning is that if you are not in practice, then you are likely to make that minute mistake, subtraction, division. Last moment to mistake हो जाती है. So that is what was happening. I was completely horrified. I thought that I would not clear. I went home for 10-15 days. But by the time result came, I had cleared. Somehow I got, first time I had got in CSET in 2022 around 98. Second, 2023 I got 72. That was just because in comprehension I got all 27 right. Oh. So that all 27 right. That got me to 72. And 2023 I prepared seriously CSET. I watched video on YouTube and I practiced. So 2023 I got 118 in CSET. 24. And 25 I'm preparing again. Right.
सीसेट को लाइटली नहीं लेना चाहिए. And CSAT is about, especially in both the papers, strategy very much matters. In CSAT, my comprehension is pretty good, and my speed of reading, that is also quite good. I know when a passage has to be read completely, or when you can just scan through and reach the Scan answer. through questions and then read the reach the answer. So when that happens, so I go for the first, when I start paper, I complete my all comprehension within 40 to 45 minutes. So that gives me ample time to invest in reasoning as well as the maths. ओके. तो मतलब प्रैक्टिस इज द की, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस थी पहले से. Yes sir. पीसीएमबी की वजह से भी, और इधर फिर आपने एनडीए की भी NDA की तैयारी बताया की थे, थी. आपने प्रिपरेशन की थी. तो प्रैक्टिस करने के बाद आपका हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस इज द की. Yes, sir. ओके. करंट अफेयर्स के लिए कैसे करते थे आप, या बिगिनर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? क्या उनको न्यूज़पेपर पहले से पढ़ना चाहिए, या क्या अप्रोच होना चाहिए? So newspaper only helps if you have a prior knowledge of the subjects which are being published in the newspaper or being discussed. Right. Then only it will be helpful. I regularly have followed the annual compilation. I was not even able to follow the monthly compilation. That because becomes too along with much. the foundation optional. Yes, that becomes too much. So I have genuinely followed only the annual compilation, but I do not stop at any one institute. I usually take at least 2 to 3, so everything will get covered. Right. That कुछ मिस नहीं होगी. कुछ मिस नहीं होना चाहिए. And usually the questions which come in UPSC current affairs, that has hardly any connections with what we read. डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है जो कंपाइलेशंस वगैरह हैं, बट ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है. Yes, that is very important. यू गेट ए क्लैरिटी कि हाँ यही करंट अफेयर्स हैं. और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर क्वेश्चन यहाँ से बाहर आता है तो वो सबके लिए ऐसा है, सेम है. राइट. मेंस में आंसर राइटिंग या सोर्सेज, दोनों चीज़ों के बारे में, जैसे आपने तो फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन किया था. Yes, sir. तो क्या फाउंडेशन कोर्स सफिशिएंट होता है मेंस के लिए, या और भी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं? For content, I would say that for mains around 50 to 60% of content will come from the foundation course if you have read it properly. Right. And others you will have to do value addition through different sources. And at last the mains, all it comes down to the writing part. Right. It doesn't matter how much you know, it will only matter what you write in the paper. Right. And writing paper is completely different from the knowledge parts, I feel. So adequate amount of practice as well as the guidance is required in mains paper. Catering to the demand of question, writing as per the what is being asked, those things are very, very important to at least get a average or good score in the mains. Right. So अगर हम देखें इस बार, तो राइटिंग की अगर बात करें, जीएस की बात करें, तो एसए में भी स्कोर काफ़ी वेरी कर रहा है लोगों का. कुछ लोगों का 120 प्लस 130 प्लस भी जा रहा है, कुछ लोगों का 70-80 तक पहुंच जा रहा है. और ये देखने को मिल रहा है कि सेम पर्सन का जिसका पहले 120-130 था, अभी इस बार उसका 70-80, अभी जैसे आप बता रहे थे, हम बात कर रहे थे अभी. तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि फिर क्या अप्रोच होना चाहिए प्रिपरेशन का? This has happened with me too, sir. In first attempt I got, in 2022 I got 123 in essay. In 23 it dropped down to 94, and in 24 I have got 100. But this 100 is has made me comfortable because I was able to write only 1.5 essay, and for that I have got 100. Then I am happy. Okay. But the problem is that with many candidates it happens. 22 what I wrote, it was a natural flow. It was not very well streamlined. So when things naturally flow, it is more likely to connect with the evaluator. Originality comes. But when it came to second attempt, I was trying to put everything in structure wise. Right. And that led to the lack of creativity at few places. I think that was the reason which led to the drop in marks. Third attempt, I was able to at least reach some balance between the both. Right. So I think balance between the creativity, not losing the originality, as well as the structure, that will get you a confirm mark.
अराउंड 120। एक एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएंगे। हाँ, अगर ये दोनों चीजें हैं दोनों तो। चीजें हैं तो नेचुरल राइटिंग का क्या है कि अगर इवेलुएटर के साथ कनेक्ट हो गया तो मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। यस अगर नहीं हुआ तो फिर यस दिक्कत है, वो है। एक स्टूडेंट है हमारी अभी, शी डिडंट गेट सिलेक्टेड बट उन्होंने अपना फर्स्ट ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में जाके लिखा था एंड शी गोट 120 प्लस मार्क्स। तो वही बात है, ओरिजिनलिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, लेकिन ओरिजिनलिटी में भी फिर वो रिस्क भी हो जाता है कई बार। यस आइडियोलॉजी से मैच होता है नहीं होता है। आपका हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है। यस तो हिस्ट्री ऑप्शनल आपने क्यों चूज किया था, और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मतलब आपने मार्क्स वगैरह कैसे आपके रहे? हिस्ट्री पर्सनली आई लाइक हिस्ट्री सर, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट था। आई लाइक द स्टोरीज एंड एवरीथिंग, सो आई यूज टू रीड। बट history, when I came out of the school, I had options to go for. I was looking for any subjects which has overlap with the history, overlap with the UPSC exam. Right. So I thought history was a good option as I had interest too. So I started reading, but history as a subject is very different from what people think as an outsider to the history. So history is very much diversified as well as the current oriented. It is not completely stagnant as people think, and it is not at all about the facts, figures, and all, stories and all. That is only for the people who are preparing for the GS, but for optional, history is very different. So initially I started with the history, so I focused on these facts, figures and everything. So 2022 I got 250. Paper was bit analytical in nature, so that got me around average mark, I could say. But in 2023 nature of the paper changed, and as I had got 250 in 2022, I was pretty much comfortable that it would be an incremental increase for me, because I have read more than what I had read in 2022. But that did not matter. My marks dropped from 250 to 236. So that led to me worry. I was even contemplating whether I should change the optional, because there are other optional, sociology and whose good marks, average was good marks. But then I met sir as well as the Agas Nil, who shows me the way to write in history. History is not just about the facts and figure, but the more weightage is given to the historiography as well as the scholars. So again I had to learn to blend the mix of this scholar part, historiography as well as the content, foundational content. So if you have the mixture of all three, then you will get good marks. This time I got the complete clarity, but I messed up in the exam paper. Still I got around 264. I am as per this year's status, we see 264 is a good score, because anything above 260 is considered to be like it is 280 of last year's. ओके और इंटरव्यू में आपका स्कोर कैसे रहे इंटरव्यू के? So 2022 was first interview. I was not very much sure about my mains, because that was first mains. So even though I am quite a balanced guy, means I won't go to extremes on any of the topics. So whatever I was speaking, it was good enough. But what I did was, whatever I read, I did not practice enough speaking. And I am kind of an introvert guy who doesn't speak a lot. So that led to very much reduced presentation during the final interview. I was trying to rush through the board, and it was Manoj Soni sir board. So I got punished for that. I got 151 in the first interview. Average marks. I would say below average. Below average. And I missed the final cutoff by 4 marks. So that hurt a lot, and next time, so I started practicing a lot, speaking practices. My roommate Ankit, he helped me a lot by asking question and listening to me. And as my voice is very hoarse, and I have a poker face, so these both things together do not work in favor, especially in the presentation part. So I had to work in that. If I have a hoarse voice, then I must do something to make it more respectful, like adding sir before presenting any argument, or putting smile on the face, good facial expressions. Those things I had to practice, because it does not come naturally to me. Right. My voice is very heavy. So if I say anything louder, it will look like argumentative. Yes. They may feel that he is trying to dominate. So these nuances also I worked out,
and then I practiced a lot. And this is also true that through this 1 year, I learnt a lot, I read a lot, so my thought process also grew. Evolved. So when I went to interview, it was Raj Shukla sir board. So he kind of grilled me. I thought I am done. I won't get any marks. I was completely, whoever asked, I said, he killed me in the interview. But when the result came, I got 205. 205 is a very good score. But I missed out because of my mains marks. So this time also I followed the same process of speaking, reading, as well as going to as many mocks as possible, because for me it was more about the getting the speaking practice, because I don't speak at all to anyone around me or something. हाँ, हमारी यूपीएससी की तैयारी में तो बोलने का कोई मौका मिलता ही नहीं है, वो आंसर राइटिंग चलती रहती है. So for that, and this time I got 185 in Preeti Sugani. It is not that good as last year's, but good enough. फाइनली सिलेक्शन हो गया तो अच्छा ही है. कोई भी सिलेक्ट कैसा भी कॉम्बिनेशन बने. सो हमने सब चीज़ों को टच किया है. हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए शेखर सर ने डायडमा ईएस पर आपको गाइड किया था, तो किस तरह से आपके डायडमा ईएस के प्रोग्राम ने हिस्ट्री ऑप्शनल में आपको हेल्प की? As I mentioned earlier, sir, I did not have much idea how to write the history answers. I had the basic content. Based on that, I got 251 year, 236 another year. So I was looking for the guidance which can be personalized in nature and which can guide me through entire syllabus to how to write the answers, as well as give the individual attention. So that is the time when I came across the Diadem Academy History Optional program. So I reached out and I enrolled in the test series program. I was also given discount for the test series program. Yes, I did. I asked for it. Because you appeared for the interview also yes, in the past. I got we offer this discount for that. And after that, I got into touch with Somsekhar sir. So he guided me through the entire syllabus. He also provided me the value material, value addition, as well as he offered me to make notes for me. My sir, I was surprised by that. Because that is not very usual. That teachers make as a teacher, no one will. That also at the personalized level. At the personal level, right. So whenever I wrote any test, sir was very quick to analyze, as well as also he made sure that I was around him when he was correcting the papers. So that helped me a lot. And Akash Neil was also there. One of my friends. He qualified last year. Yes, sir. He also helped me a lot. Right. So these two things together, even though I could not replicate entirely into the paper, but I'm sure that it will help me in the next attempts. Right. So आप कुछ कहना चाहेंगे जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या प्रिपरेशन के मिडिल में हैं, तो आपने इस जर्नी में ऑलरेडी आई थिंक 21, 22, 23, इट्स बीन 4 to 5 years. Yes, sir. तो जर्नी के दौरान अप्स एंड डाउन्स जरूर आते होंगे, हर यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी में आते ही आते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, तो उस चीज़ को आप मेंटली इमोशनली कैसे मैनेज करते थे? For me, my family was always there, sir. And even though I'm an introvert, but I have few people around me who are very good support. Like my roommate, then Akash Neil, then Ma is there, mummy, papa and brother. So they provided me with enough emotional support. And then I got something wrong habit, that was of gaming. Even though it provided me with some, I would say, distraction during the tough times, but it did more harm than the good. I have not done any gaming since the result have come out. Okay. I don't feel like gaming now, but I have wasted a lot of hours. So I think if you are feeling down, talk to the people, reach out to the teachers, as well as the family will always be there for you. Talking helps a lot, and see that if your self-analysis is very important. I did not feel any time very much low or depressed, because I knew that I can do better. I always अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि कर सकते हैं, बस समय की बात है. That was the real right. और लेकिन ये है कि एक समय ऐसा आता है ना, चाहे आपको पता भी है, लेकिन वो अनबियरेबल लगने लगता है, तो वहाँ पर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके खुद के आसपास के जो लोग हैं वो काम आते हैं. तो बिल्कुल सही बात है. और कुछ आप कुछ ओवरऑल आपकी जर्नी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे
जो लोग लिसनर्स हैं उनके लिए कुछ आप 2-3 टिप देना चाहेंगे जो उनको हेल्प कर सकते हैं प्रिपरेशन में? First thing I would say that not only generally but as in general, be honest to yourself because that will only help you grow. Honesty ensure that you get a proper feedback on yourself. I have made lot of mistakes during these 2 to 3 years, and that has cost me around 2 to 3 years of my life. I would say that we all have the potential, and the growth comes incrementally. It will come little at a time, and it will gradually improve further. So don't lose hope at the initial stage, but work consistently. My biggest weakness is that I lack focus as well as I am not consistent. So that has led to me wasting my time around 2 to 3 years. But now I am trying to come back on track. I have started with the physical activity. I started with a little bit discipline as well as the kind of focusing self-analysis so that I can improve on these weaknesses because I know that these are flaws in me. So recognize your flaws and work on that. That would help. बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है। Yes. अब देखिए आपका सिलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आई वॉज नॉट फोकस्ड इनफ। अगर फोकस्ड होता तो शायद फर्स्ट टाइम में सेकंड टाइम में सिलेक्शन हो जाता। तो इस लेवल की ऑनेस्टी चाहिए। Yes. क्योंकि जब ऑनेस्टी से कन्फ्रंटेशन होगा तो फिर उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और सेकंड, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इंक्रीमेंटल, आप रेगुलर काम करते रहो और धीरे धीरे थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में यू विल ब्लास्ट इट, या आपको लगता है कि नहीं फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में, थर्ड में, मतलब आपको धीरे धीरे सारी मेहनत करते रहोगे। जिनका फर्स्ट में निकलता है लोग देखते हैं कि फर्स्ट में निकला है, ये नहीं देखते कि वो बंदा पिछले कितने साल से लगा हुआ था। या फिर जैसे आपका थर्ड में निकला है तो थर्ड में जो आपका निकला है वो थर्ड की वजह से थोड़ी निकला है, उसमें तो फर्स्ट का भी सेकंड का भी कंट्रीब्यूशन है। तो सारा जो क्रेडिट है वो सभी सारे मतलब पूरे प्रिपरेशन को जाता है उस समय जो भी आपने किया। तो आदित्य, एक क्वेश्चन आपसे और मैं पूछना चाहूँगा कि एक सवाल बच्चों के मन में उठता है कि कोचिंग लें या ना लें, इसके बारे में आपका क्या मानना है? मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से एक पर्सनल डिसीजन है सर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बिना कोचिंग के क्लियर कर सकते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कोचिंग लेके क्लियर करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या हैं। मैं बोलूँगा कि कोचिंग हेल्प्स इन गाइडिंग एज वेल एज द गेटिंग द रिसोर्सेज एट वन प्लेस। सो उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा इधर उधर टहलना नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे हैं जिनका फोकस नहीं हो पाता, जो एक चीज़ पे रह नहीं पाते, अटल नहीं हो पाते, उनके लिए कोचिंग बेनिफिशियल है। क्योंकि एक बार आपने ज्वाइन कर ली तो एक जगह से आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको पूरा रास्ता पता चल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में पूरी तरह से फोकस्ड हैं, दे आर वेरी मच क्लियर, उनके पास काफ़ी क्लैरिटी है, गाइडेंस तो हाँ, गाइडेंस नहीं चाहिए मेंबर्स के थ्रू कैसे भी करके। उनका अपना बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छे कॉलेज से आए वगैरह वगैरह जो भी है, तो वैसे लोग बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। कोचिंग ये करता है कि सारी रिसोर्सेज को आपके हाथ में दे देता है। तो आपको वो एफर्ट आपका सेव हो जाता है कि आपको कलेक्ट करने के लिए चारों तरफ घूमना नहीं पड़ता। सो इन दैट वे कोचिंग हेल्प्स, स्पेशली इन द सब्जेक्ट्स, ये साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, तो जिनका बैकग्राउंड नहीं है इन सब्जेक्ट्स में, उनको काफ़ी डिफिकल्टी होती है खुद से पढ़ के समझने में। तो यहाँ पे कोचिंग डेफिनेटली हेल्प करता है इससे। तो डेफिनेटली कोचिंग का ही रोल होता है। और एक चीज़ जो आजकल बच्चों के मन में आती है कि एक ही पर्सन, एक ही टॉपर मल्टीपल कोचिंग पे कैसे हो सकता है, तो ये प्रैक्टिकली कैसे होता है? क्या एक ही कोचिंग का रोल होता है या सभी का रोल होता है? कैसे इसको थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहें? ये एक्चुअली मतलब दोनों तरफ की चीज़ें सही है। एक टॉपर मतलब फाउंडेशनल यूपीएससी इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि लोग खुद पे डाउट करने लगते हैं। अगर किसी की प्रिपरेशन 3 से 4 साल तक चल रही है और अगर वो फेल हुआ है तो ही लुक्स फॉर द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, वो इधर उधर देखने लगता है। कहाँ से क्या कर लूँ जो मेरा स्कोर इम्प्रूव हो जाए, कहाँ से कौन सी हेल्प ले लूँ। मैंने जहाँ से भी पॉसिबल था वहाँ से हेल्प ली है। किसी ने कहीं से भी हेल्प किया, कुछ भी बता दिया हल्का, क्योंकि वी आर इन डेस्परेट, जब आप कहीं से कुछ भी हो जाए, जहाँ से जो चीज़ मिल रही है आप ले लेते हो, ले लो, तो वो ठीक है। और जब क्रेडिट देने की बात आती है तो बनता है उनका कि अगर हल्का भी यूज भी किया है, कोई मटेरियल भी पड़ा है तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट दिया जा सकता है। प्रोपोर्शनेट क्रेडिट दिया जा सकता है। और ये है, एंड बट एवरीवन प्लेज अ रोल।
और लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोल है वो स्पेशली फाउंडेशनल कोर्सेज फाउंडेशन का, एज वेल एज द आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स, दोज थिंग्स आर जहाँ पर पर्सनलाइज अटेंशन हो। तो Yes, मतलब sir. आपकी बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि कोचिंग लेना नहीं लेना ये आपका पर्सनल डिसीजन हाँ, है, लेकिन कोचिंग से सारी रिसोर्सेज एक जगह पे कंबाइन मिल जाती हैं, Yes, sir. आपका एफर्ट कम हो जाता है। Yes, sir. दूसरा आपने बोला कि क्योंकि जर्नी लंबी हो जाती है तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट ने इनिशियल कोचिंग्स ज्वाइन की हुई है उसके अलावा भी उसको ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट की। तो बहुत सारे कोचिंग्स का रोल एक टॉपर की सक्सेस में हो सकता है। Yes. किसी का आंसर राइटिंग में है, किसी का फाउंडेशन में है, किसी का टेस्ट सीरीज में है, किसी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो मल्टीपल कोचिंग्स अगर क्रेडिट क्लेम करते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्सेज मेंशन करना चाहिए, कोर्सेज मेंशन करना चाहिए, जो कि प्रैक्टिस आज के समय में स्टार्ट हो चुकी है। Yes, पहले sir. ये प्रैक्टिस नहीं थी, तो पहले कंफ्यूजन होता था। आज के समय में तो एकदम क्लैरिटी होती है कि हमारे टॉपर ने ये कोर्स ज्वाइन किया है। Yes. तो वहां से क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई इस कोचिंग में ये कोर्स से टॉपर्स निकल रहे हैं। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिसने जो भी किया उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा क्रेडिट क्लेम भी नहीं करना चाहिए। Yes, और फिर मुझे लगता है यूपीएससी एस्पिरेंट अगर वो 1-2 साल अटेम्प्ट दे देते हैं तो वो खुद भी समझदार हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि कौन कितने वैल्यू दे सकता है। ठीक है आदित्य, बहुत आपके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। माई बेस्ट विशेस टू यू और माई गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। Thank you.